Sulaiman Rahim, Assalamu alaikum. Welcome to the quarantine series. आज का दिन मेरे लिए बहुत खुश रहा है. I hope आपके लिए भी खुश रहा हो. मैं formally dressed था. I continued because it was such a long time के formal कपड़े पहन के कहीं मुलाकात करने गया बहुत important जगह पे. So I thought I'll carry on. Career talk है, so I thought I should look professional as well. रजा भाई कुछ ऐसी बातें ना करें जो कि directly मेरे कपड़े देख के आप सोचें ये साला बैठा हुआ है ऐसे ही. Not applying the thing. So very important conversation. Career सिर्फ बच्चों के लिए important नहीं है, सिर्फ teenagers के लिए important नहीं है, early graduates के लिए important नहीं है, mid age के लिए नहीं, बल्कि it's something that we keep doing all our lives. Career choices have changed. We are in the VUCA world now, in the COVID-19 world, and बहुत सारे लोग हैं हम में से जो जॉब्स लूज कर रहे हैं, वरिड है. कुछ लोग लीव्स पर हैं, जानते नहीं है वापस कैसे जाएंगे. And we have somebody in the house who has done career all his career and done it across Pakistan and outside Pakistan as well, mashallah, all over the world now. Raza Abbas is a human development practitioner and has executed inclusive career reform projects with UNFPA, World Bank, foundations, institutes, academia, NGOs, schools, cadet colleges and universities. आपका करियर जो है उसमें पाकिस्तान में भी he is a premier global forums across 6 continents. Raza Abbas is a pioneer of professional career counseling in Pakistan. यानी प्रोफेशनल्स के लेवल पे जो करियर काउंसलिंग होती है, लाइक आई सेड, नॉट जस्ट children and young people. He has global and national experiences in career, employee, teacher, human and youth development, entrepreneurship, and has counseled, coached, and trained countless employees, teachers, and youth across a diverse range of industries, including banking, government development, media, healthcare, insurance. मैंने बहुत सारी जगहों पे रजा भाई को देखा है, टाइम इन्वेस्ट करते हुए देखा है, और बहुत ही ऑथेंटिक एडवाइस dispense करते हुए देखा है. Many a times on paid forums, many a times on voluntary forums, community forums. He's been nominated for Thinkers 50 Marshall Goldsmith Award 2019 and recipient of NCT International Career Practitioner Award in June 2019. The profile is long. It's a lovely man. Let's get going. Thank you, Raza bhai, for joining us. थैंक यू बहुत ही उमैर. कोई अदबी आपने सलाम किया है. कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? Wonderful. आप कैसे हैं? How's the lockdown for you? The lockdown is inspiring. We just had a wonderful rain in Karachi a few hours ago. So the weather is nice, it's positive, and it's hopeful for everyone. Wonderful. Thank you for joining us. बहुत अहम मौजू है और बहुत सारे सवाल भी आएंगे, आई एम श्योर. I'd just like to ask everyone कि जरा एक्टिव हो जाए. मुझे पसंद है जरा हाथ चल रहे हो, हाथ में जरा चाय शाय भी पकड़ ले, एक्टिव होके बात पूछें, जो बातें सीख रहे हैं उसको रीइंफोर्स करें, कम्युनिटीज बिल्ड करें. बहुत सारे लोगों के challenges shared होते हैं. So let's make a community out of it. किस चीज के लिए बना हुआ है? Okay, are we back in? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है. ओके, वंडरफुल. थैंक यू. मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि किस चीज ने आपको इतना इंस्पायर किया टू पायनियर द करियर काउंसलिंग एंड करियर डेवलपमेंट मूवमेंट इन पाकिस्तान? व्हाट इज इट दैट गॉट यू गोइंग? सॉरी, मैंने बहुत सारी बातें अंग्रेजी में खुद पीट दी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बात उर्दू में कर सके. Thank you, Umair, for inviting me to your wonderful series. And before I start, I think one of the things that you have done this COVID-19, you have remained consistent. You're doing it every day, and you're inspiring countless lives yourself. So, acknowledgement to Mr. Umair Jaliawala, mashallah. Career counseling, something very close to my heart. When I was in the US, I felt, I was very privileged to go to America and pursue higher education. And when I came back, I felt that, there are a lot of countless people in this country that have a lot of competence, but they are clueless when it comes to career direction.
So it is very, very important that someone needs to pick up where the gap is in the education industry. And what I did was I started finding international forums that actually do career counseling as a civic right and as a policy statement. And that was something that was very inspirational. I wrote various papers, practitioner papers, research papers. It was very competitive, but it was an honor to be the only one from Pakistan. I traveled a lot across the globe, and it was something very inspiring कि अगर आप किसी को जिंदगी का मकसद बता दें बहुत ही कम उम्र में तो उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी. And True. that was the biggest inspiration that in this country in Pakistan हम ये देखते हैं कि इतना काबिल हमारे पास human resources, one of the best human resources in the world, but they do a lot of trial and error. उनको करियर फील्ड से ही नहीं मिलती है. जब करियर फील्ड से ही नहीं मिलती है तो यूनिवर्सिटी में बड़े मुश्किलों से जाके पहुंचते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से जाके जॉब मिलती है, फिर जॉब में नहीं बनती है, फिर आज जॉब करी आज नहीं करी, फिर फैमिली में शादी हुई, शादी कभी चली कभी नहीं चली, तो इट हैज अ होल चेंज. तो मैंने कहा व्हाई नॉट एक्चुअली स्टडी दिस प्रोफेशनली. एंड देन आई वाज वेरी सपोर्टिव थ्रू माय फैमिली. They actually supported me a lot कि this is something different, but it's good for the country. So हमारी पूरी support है तुम्हारी. वंडरफुल वंडरफुल. मैंने थोड़ी बातें आपकी मिस की, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सफर जानता भी हूँ तो आई टेक द लग्जरी. थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दे शुरू में ये सारी टर्म्स. करियर काउंसलिंग एक हम सुनते हैं, करियर गाइडेंस कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं करियर डेवलपमेंट, कुछ लोग कहते हैं करियर रेडीनेस, एंड देन करियर एजुकेशन. सिंस यू आर द करियर एक्सपर्ट, सो हियर इज द लिस्ट फॉर यू. गो. अच्छा, career counseling जो है basically I'll try to be as simple as possible. Career counseling is one on one. ठीक है, very simple. Career guidance is group. When you are guiding a group of people, ठीक है, that could be school students, that could be young entry level graduates, that could be students at university, college, schools. ठीक है, career development is how do you ensure when people come and in the workforce, how do you ensure that not only they are able to gain employability, but also job creation as well? And how do you ensure कि जो लोग jobs पे काम कर रहे हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उस job में? Is just getting a ओके. job, is that the target, or succeeding in the job? That's the key area, right? What is career readiness? Career readiness is more related to universities. I know in Pakistan we have now started these career development centers, which is a good step, but still we need more of those. ठीक है, तो it's very very important कि आप जो हैं करियर रेडीनेस बाकायदा सेंटर्स हों कराची में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में. एंड इट इज़ वेरी वेरी important to help students find their career direction, provide them constant direction in regards to CV writing, interviewing skills, how do they market themselves, how do they जी. interview, and how do they find their dream jobs. ट्रू. वंडरफुल. ब्यूटीफुली पुट. क्लेरिफाई कर दिया भाई. वंडरफुल. बड़े Career. स्पेसिफिक जवाब मिलते हैं जो लोग बहुत कहते हैं कि अगर आसानी से समझा नहीं सकते तो खुद नहीं जानते. तो जिन चीजों पे हम रैम्बल कर रहे होते हैं ना, उन पे हम खुद क्लियर नहीं होते. तो यू वेरी क्लियर माशाल्लाह. व्हाट इज द आइडियल एज टू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स? किस एज पे करियर काउंसलिंग भाई शुरू करनी चाहिए? Career counseling is a lifelong process. ठीक है, ideally for students that want to achieve counseling services and acquire counseling services, the ideal ages are grades 8 to 12. That is the ओके. age in Pakistan जब आप मुख्तलिफ आपके पास options होते हैं साइंस के, मेडिकल के, आर्ट्स के, and it is very very important to diversify the mind and to able to channelize that. So if you are able to do some श्योर. really institutional work at these ages, that is the foundation of career development, career counseling, career guidance, career readiness, career education. तो अगर आपने वो 4 साल solid कर लिए, अगर आपकी स्कूल में या कॉलेज में करियर गाइडेंस सेंटर है, करियर बाकायदा करियर काउंसलर्स हैं, then your 38 years of your life will be full of inspiration. वंडरफुल. एंड इफ दैट्स नॉट ट्रू, अगर ये 8 से 12 पे ना तवज्जो दी जाए, तो व्हाट आर द यूजुअल मिस्टेक्स यू हैव सीन यंगस्टर्स मेक? Okay, excellent question. um, as you know, idealism does not there are various challenges to idealism as well. अगर देर से भी आ गए ना, लेकिन आए तो सही, कोई मसला नहीं है. ठीक है, अगर आपने फर्स्ट करें आप मैट्रिक के बाद इंटर के बाद आप आए ना, आपका
first year mein you had a very bad decision. I think it's always Hmm. important whenever you come, you need to give them hope and you need to give them direction. Okay. And you need to Okay. give them the ground reality. We do not give them, हमें उनको illusion की जिंदगी नहीं दिखानी है, हमें बताना है क्या आप कर सकते हैं in your given scenario. ठीक है ना, अगर आप खुदा ना True. खास्ता if you are struggling in mathematics or in science, so we will not persist them to please continue with science. And the way you have very wisely asked, what happens is during university, first year कर लिया, second year कर लिया, parents का pressure होता है, Hmm. family का pressure होता है कि जी आप engineering कर लें या doctor कर लें. When they see those failing grades, that is when it hits them really hard कि जी इतना पैसा खर्च हो गया, देन दे कम, Hmm. अरे यार सॉरी उस वक्त नहीं आया, चलें अब बता दें अब क्या कर लें. ठीक है ना, तो Yeah. दैट इज, we don't want that to happen, but when that does happen we say okay, it's not the end of the world, just take a deep breath, and we can always change careers, right? We can change career fields. ठीक है, and that gives them a Yeah. ray of hope, a ray of beam of inspiration कि ठीक है जो गलतियां हुई, जो माशरे का प्रेशर था, जो फैमिली का प्रेशर था, now at least we have figured it out, and now we have some ray of hope of going forward. ब्यूटीफुल। तो एंट्री पॉइंट कोई भी हो सकता है, लेकिन कॉस्ट भी है। यू कैन एंड अप डूइंग एंडिंग सब्जेक्ट्स दैट यू स्ट्रगल विद ऑल योर लाइफ, आपके अंदर पोटेंशियल ना हो। तो बहुत अहम गुफ्तगू है करियर की। आप सवालात पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ना सोचे कि सिर्फ मैं सवालात पूछूंगा। और लाइव भी ज्वाइन कर सकेंगे टुवर्ड्स द एंड। अगर कोई इंटरेस्टेड है लाइव करियर काउंसलिंग में, सो टुवर्ड्स द एंड हम एक 10 मिनट का डेमो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना सीवी साथ हमें पहले भेजना होगा। और रजा भाई आपसे कुछ गुफ्तगू लगाएंगे। तो दैट विल बी गाइडेंस फॉर एवरीवन। सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन लाइफ करियर काउंसलिंग राइट नाउ, द लास्ट 10 minutes वी वुड लाइक टू इनवाइट वन ऑफ यू। अगर आप अपना रेज्यूमे शेयर करें या लिंक्डइन शेयर कर दें, साथ कुछ गुफ्तगू लाइव आके कर सकें, सो दैट वी विल डू टुवर्ड्स द एंड। प्लीज लेट अस नो इन कमेंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड, और हम आपको लिंक देंगे एज वी गो फॉरवर्ड। थैंक यू रजा भाई फॉर अग्रीइंग टू डू दैट एज वेल। Let's go on. So it's a lifelong process. It starts from school, continues till employment and job creation. Um, can you elaborate on this? What is happening at each level there? Okay, during the school level, that is classes 8 to classes 10, you basically help them with various activities, very experimental learning activities. What you can do is you can have a career day. What is a career day is, I learned this concept when I went to South Africa. I was representing Pakistan in Cape Town. Wonderful, you invite different professions. एक कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई लॉयर है, कोई बैंकर है, कोई ट्रेनर है, कोई टीचर है, कोई एजुकेटर है. So in a very nice, in a very beautiful way of giving them various ideas in a very fun manner. ठीक है, it's more like a Nice. career galaxy of different leading experts. ठीक है, and then you also offer them one-to-one counseling with a counselor on board as well. Then once you come into the intermediate level, it is very very important that you have subject specialists. Engineering के specialist कौन है, arts के specialist Hmm. कौन है, humanities के Okay. specialist कौन है. So then you are expanding the canvas of career counseling and career guidance. ठीक है, once you, and then it is very important that now they're going towards university. Unfortunately, in Pakistan right now, only 10% of people in Pakistan are able to go for higher education. Now that's a very small number. So we need to ensure that colleges जो हैं Pakistan में, we need to give them a lot of opportunities of various universities जो आएं college में, बताएं कि ये जगह पर हैं, यहाँ scholarships हैं, यहाँ financial assistance हैं, यहाँ career center है, यहाँ पर बाकायदा incubation है, तो that उनका जहन खुलेगा. Once they come towards the university, it is important to focus on employability and job creation. Not everyone will like to do the 9 to 5 job. That's perfectly okay. So how do you ensure that? Hmm. How do you create the Bill Gates, the new Bill Gates from Pakistan? You give them idea generation. You give them that you develop a lot of incubation centers. इस वक्त कराची में और पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे करियर incubation centers हैं जहाँ पर आइडिया जनरेशन के बाकायदा incubation labs हैं. That is a wonderful way to give them a platform. True. Okay? Give them a room Beautiful. to move forward. And then once they reach the, it is very important towards the last 2 years to offer a mandatory, and I say mandatory, career management course. There should be a policy by Okay. ETC कि इतने गिफ्टेड लोग हैं आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में, 60% नौजवान लोग हैं, हम इतने कोर्सेज पढ़ते हैं, करियर मैनेजमेंट का कोर्स क्यों नहीं करते?
जो अहम जैसे चीज है आप वो कोर्स में नहीं आती। जो अहम चीज है वो वो हम तरबियत नहीं पे पढ़ छोड़ रहे दी हैं। जाती। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इम्पेरेटिव that we need to know कि how do we do career planning for ourselves, how do we market श्योर। ourselves, how do we write a CV, how do we write a cover letter, how do we do information interview, how do we find a job, how do we give an interview, how do we find a job globally, nationally, and the list goes on and on. And then once we go in our last year, how are you able to package yourself? ठीक है ना, ट्रू। बेशुमार यूनिवर्सिटी से लोग निकल रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पैकेज योरसेल्फ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you need to be confident of yourself. If you're not confident of yourself, बिल्कुल। whichever university you have studied, whether it's US, UK, Turkey, Malaysia, Pakistan, you need to believe in yourself. When you believe in yourself, that aura spreads, right? The तो मैं world बच्चों से believes ये in कहता हूँ, you when you believe in yourself. हाँ, तो I get surprised when I see students. I went to a very leading cadet college, I won't mention the name, और वो बच्चा 90% उमर कहता है मैं ये काम कर लूंगा। मैंने कहा आपकी 90% है इंटरमीडिएट में, मेट्रिकुलेशन में, why are you not believing yourself? Just give yourself a pat on the back. आपने किया है, आपकी 90% है, तो वहां पर इंटरेस्टिंगली जो लोग थे इर्द गिर्द के कि रज़ा साहब आप बच्चों को बिगाड़े नहीं। मैंने कहा बिगाड़ने की बात नहीं, मैं उनको सेल्फ एस्टीम दे रहा हूँ, दिस इज सेल्फ एस्टीम, दे शुड लव देमसेल्फ दैट दे आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड दे डिजर्व द बेस्ट। But you see, that's the cadet. That's the environment that we put our children in. And previously zarurat bhi thi aur wo preferred bhi tha disciplining, and how we had to train people for many jobs the way they were. But the world has changed significantly now. It's quite a disfavor. इरफान पूछ रहे हैं कि 15 साल करियर में लगा चुके हैं, where can I excel more than what I'm doing right now, and what are the chances I will not fall on my face with the new career because I have a family to support. Okay, 15 years you are in your career, you want to switch a career or you want to switch the industry? So अगर if you इरफान can be भैया more specific. रियल काउंसलर है, ऐसे जवाब नहीं देंगे जैसे ट्रेनर सवाल उठा के जवाब दे देते हैं। So just for the general audience, I'll let you know. काफी लोग चाहते हैं career switchers, career game changers, है ना, वो एक ही फर्स्ट करें। अगर एक बैंकर हैं, I'll just try to be more holistic ताकि सबका फायदा हो. And if anyone has one-to-one questions, I'll be happy to. I'll share my email towards the end, and we can have a one-to-one session as well. But श्योर। for the general audience, I'll be more inclusive. तो अगर आप एक करियर में 15 साल से हैं या 20 साल से हैं या 25 साल से हैं, you want to change. So what are the things that you need to do is, number one, you need to make sure that your resume is a functional resume. ठीक है, आपकी जो इंडस्ट्री की जो चीजें हैं, what are the transferable skills that you can use it in a different industry. ठीक है, and you need to be very flexible when you are going to a different industry. And what is the way of being flexible? Whichever industry you decide to choose, you need to start with a beginner's mindset. आप उस फील्ड के गुरु हैं, 15 साल आपने उस फील्ड में अच्छा काम किया, लेकिन इस फील्ड के अभी आप बिल्कुल बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, राइट? तो जब आप बिगिनर्स माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे, तो you will reach the expert mindset very quickly. But if you will have a preconditioned mind, I'm already the 15-year expert, and I want the expert in this new industry, you have to earn that. ठीक है, so it's all about intellectual humility, it's all about being flexible, it's all about your interpersonal skills, and it's all about your transferable skills. तो True, wonderful. Sorry, please go on. तो जो आपके ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, कौन कौन से ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं? आपका एक्सपीरियंस, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस। हमें पता नहीं है कि आपका क्या स्पेसिफिक है, तो आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल, ठीक है? तो वो चीजें हर जगह ट्रांसफर होती है ना, हर शख्स को। people require people in administration, people require that you can sell well, you can speak well. So if you have those skills that's a gold man in any industry that you plan to go, ठीक है? So you need to make sure. Especially in politics. That's a I would not like to go. transferable skill even to politics. I will not go into that Sorry. unknown train. वो किसी और दिन के लिए रखेंगे. But good humor though. True. नो आप जब भी कोई अब आजकल ये बात करता है ना कि देखिए अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो ना, आप कहीं भी पहुंच सकते हो। फिर मुझे ख्याल आता है कि वाकई सबसे बड़े ऐवानों पे पहुंचने वाले लोग सबसे अच्छी गुफ्तगू और सबसे अच्छी कहानी सुना सकते हैं एंड कन्विंस कर सकते हैं। सो
So true. I'm just recapping what you've said here for my own learning and to sort of reinforce very important dialogue है. Career पे हम बात कर रहे हैं रजा अब्बास भाई के साथ, and he's a professional career counselor, has worked in Pakistan extensively and outside Pakistan as well. Now more so a global career expert. और जो बात की है वो ये कि you can, when you're switching your career, there's a piece transferable to many other companies, many other organizations, work portfolios. लेकिन बिगनर्स माइंडसेट रखना जरूरी है जब आप ऐसा शिफ्ट करें, एंड दैट अलाउज यू to rise. That humility is important. There is hope, and that's what this process is about. Raza Abbas is with us. आप में से कोई अगर live career counseling चाहेगा तो I would request you to please put it down in comment. You'll have to share your resume, और हम towards the end जो है आपको include करेंगे dialogue के अंदर. Thank you Irfan for asking that question. Anita is asking, is SWOT analysis necessary for career choice? How career counselors can help after student done with his or her analysis? SWOT analysis is not just important for your career choice, but it's important for your organization as well, whichever organization that you are working. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अपने strengths के बारे में जाएंगे कि what are your strengths, what are your weakness, what is the opportunity, and what's your threat. So for a career choice, it depends what age are you in when you are doing this SWOT analysis. Are you in your school? Are you in your college, or are you in your university? If you're in your university, unfortunately, you don't have time for trial and error. You have to figure it out ASAP. क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप हमेशा ट्रायल एंड एरर ही करते रहेंगे तो फिर आप एक्चुअल मैदान में कब पड़ेंगे आएंगे. ठीक है, तो SWOT analysis True. is a very effective tool. Definitely you should do it, and it's important that people move forward with that. Someone doesn't know his passion, how to craft career. तो पैशन नहीं मिल रहा है. इतनी पैशनेट कॉम है हमारी, लेकिन पैशन नहीं मिलता लोगों को. आई थिंक पर्पस नहीं मिलता, बट या we understand what you mean, Asad Abbasi. Thank you for asking that. Raza bhai, how would you respond? Passion, career calling, meaning in life, purpose in life, ये सारी बड़े important words हैं, बड़े इसके बेशुमार TED talks हुई हुई हैं. What ignites you in your free time? I'll just give a very brief story of mine. When I was in my university days at University of Arizona, मेरा volunteer work career counseling था. I loved it, and I was so passionate into it. किसी को जिंदगी का रास्ता बताना, किसी को बताना कि how great you are, what you can do wonderful with your life. That just gave me such a great vitamin C. वो कहते हैं ना आपको energy का ऐसा aura आता है. That ignited me. Yeah, true. What a wonderful feeling. So Beautiful. going back to your question is, what are your strengths? What does Asad Abbasi really love to do? ठीक है, what are your areas of improvement? ठीक है, what ignites you and what irritates you? ठीक है, what do you do in your free time? ठीक है, what are your extracurricular activities? ठीक है, तो I'm just giving you various foods for thought. And what is your purpose in life? What problems of the world do you want to solve? That's a total paradigm shift in career counseling. आप ये नहीं करेंगे आप बड़े होके क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर. That's the traditional 70-year-old mindset, right? Now the Wonderful. new paradigm of career counseling is, आप क्या दुनिया के कौन से मसले हल करना चाहते हैं? बिंगो. आप आप चाहते हैं कैसे काम आना चाहते हैं? वाह. आप क्या किसके काम आना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं? ब्यूटीफुल, वंडरफुली सेड. सो ये सोचें कि क्या बनना है, इसके बजाय ये सोचें कि क्या करना चाहते हैं, क्या इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं, एंड then you work backwards. How does that give greater clarity in picking what you pick? Yes, of course, why not? एक सवाल आया हुआ है, I'll just like to respond to that. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है. Umair, I've known him for the last more than 10 years now, mashallah. And he is a testimonial to that. When we started working in BBSYDP, that was a government project, the Nazir Bhutto Shaheed Youth Development Project. And I trained 375 master trainers of government schools. That was a very inspirational project with a lot of wonderful people, including Umair. And we developed master trainers, and we help them how they can become career educators. What is a career educator? ये मैं show में बताना भूल गया. A career educator is a person who is trained in career education and who can impart it to their students. And that was a wonderful project in the history of Sindh.
कि you can actually see कि ये इतना बड़ा Yeah. project और we could see that there was change was happening. So we are not just limiting it to private, not just elite. Career counseling is for everyone, and just for motivation point of view, career counseling is a civic right. Every individual in Pakistan deserves it. Wow, it's a civic right. अगर लोगों का हक है कि वो अच्छी जिंदगी जिएं, वो मौके हासिल कर सकें, तो ये जरूर उनका हक है कि उसको करने के लिए जो गाइडेंस चाहिए और उसको करने के लिए जो प्रोसेस है वो भी उनके लिए अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो हर इदारे के अंदर. Demotivation also pulls you back from your passion or your vision. How much demotivation should affect you? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में आपने सवाल किया है नूर साहब. अच्छा सवाल है. I think I like brain जी. teaser. It makes my brain work better, mashallah. So demotivation देखिए is जब part of the जब process. गेस्ट को भी आंखें लगानी होती है और कमेंट भी साथ पढ़ना होता है तो ऐसे सवाल जो है ना समझ नहीं आते पढ़ते हुए. So demotivation is part of the process. Demotivation, setbacks, failure. I don't call it a failure. I call it setback. तो आप एक demotivation की एक डिक्शनरी, एक डेटाबेस बनाएं कि कब demotivation हुई, उसमें आपका आपका कसूर था, किसी और का कसूर था, what was the learning, ठीक है. Demotivation is a temporary phase, is not a permanent phase. Number one. Number two is you need to have some people on speed dial that will make you feel better than you are. ठीक है ना, कहते हैं ना फ्रेंड आर ग्रेट थेरेपिस्ट. उनसे बात करें वो आपको ऐसा मोटिवेट कर देंगे, आप यू विल स्टार्ट फ्लाइंग, राइट. एंड you don't need to be, कहते हैं ना, the entire work on self development and self growth is very tender work. You need to be kind on yourself. You do not need to be very aggressive or very chaotic on yourself. आप कहें ठीक है, I could not make it, it's not the end of the world, it's not the end of the world, कल एक और सूरज निकलेगा, you will start off the day with a new sunrise. True. Zimil Shah is asking, she wants to pursue a career in counseling. That's something she loves to do. So what are the opportunities and platforms to pursue it as a professional career? Okay. In Pakistan, there is only one university that offers career counseling as a degree, which is good, mashallah. तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में, एजुकेशन में भी आ रही है. There is which university offers it? NUS University. NUS University Wow, offers a great. degree in career counseling. A lot of people will be surprised, but that's the reality. Okay, so it is very important to you can do that over here, or if you want to go abroad, you can do it in the Scandinavian countries. Why I shared Scandinavian countries? क्योंकि जितनी Scandinavian countries, I had the pleasure to represent Pakistan there as well. कि वहाँ पर career counseling एक civic right, एक law हो गया है. और जो दूसरी कंट्री है वो साउथ कोरिया है. इफ यू कैन लर्न कोरियन लैंग्वेज, नथिंग लाइक इट. तो ये वो जगह है जहां पर बाकायदा करियर एजुकेशन एक्ट है. यू कैन गूगल अप साउथ कोरिया करियर एजुकेशन एक्ट. दे हैव पास्ड द लेजिस्लेटिव बिल इन द असेंबली. हाउ इंस्पायरिंग इज दैट कि आप जो Wow. है, आई विल हैव टू शेयर So अनदर थिंग दैट. necessary if you want employment in the country. That's so necessary, right? राइट. just तो वहां like just like some, oh sorry, it's a political example. Please carry on. I have this bad habit. जैसे कराची में एक्सपो है उमेर, यू नो एक्सपो ना, जी एक्सपो पूरे पाकिस्तान में है. जी जी. ऐसे साउथ कोरिया में सियोल में जॉब वर्ल्ड है. Just do a Google search on YouTube, Job World. What is Job World? Wow. It is a wonderful career simulation for young kids where they go with their parents, with their teachers, and they experience career simulations. तो अगर कोई यहाँ वेंचर कैपिटलिस्ट Wow. सुन रहा है यहाँ पर इस वक्त आपके इस शो को, अमेरिकी शो को, तो why not develop a job world in this beautiful country of ours? This is True. this is real. This is real CSR, corporate social responsibility. So it was an This amazing, is it was a very humble experience of visiting that as the official guest of Job World, and that was just a wow, a simple wow, कि यार ये बच्चे कितने गिफ्टेड हैं, और ये भी आज देखें कि साउथ कोरियंस कितने आगे चले गए. wonderful. I've just flashed it on the screen. You can look it up. It's a beautiful, looks like a great event. Thank you for sharing that. Excellent. I'd like to get to a very important question. क्योंकि हमारे माँ बाप चीफ जस्टिस होते हैं करियर डायरेक्शन के ऊपर, उनके अपने भी कुछ ख्वाब होते हैं, फिर खानदान की कुछ मिसालें होती हैं. हाउ कैन करियर एजुकेटर्स एंड काउंसलर्स डेवलप अ डायलॉग विद देम? अच्छा सवाल है. पेरेंट्स जो हैं हमारे, वो हमारे पूरे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में, इट्स अ वेरी कलेक्टिव सोसाइटी, राइट.
So at times, parents, we need to ensure when we are talking with our parents, when we are talking about career choices, when we are talking about career fields, we need to have a very respectful form of dialogue. ठीक है, बच्चे कुछ जज्बाती हो जाते हैं, अब हमें यही करना है, माई वे और द हाईवे. तो आई थिंक हर शख्स जो है ना रिस्पेक्ट का क्या कहते हैं मुस्तहक है. तो वी नीड टू डू इट इन अ वेरी especially the केयरिंग. parents. हाँ, स्पेशली विद पेरेंट्स और वालदेन पर जितना आप अपना सिला रहमी करेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो हाउ डू वी डू दैट? पेरेंट्स जो हैं एक अलग जनरेशन के लोग हैं. दे हैव सम ideas for their sons and their kids. You need to ensure कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में पेरेंट्स कितने ज्यादा knowledgeable हैं. If for all due respect they are not knowledgeable about that field, it's perfectly okay. You need to orient them. Career educators, I recently started a groundbreaking research about 3 years ago, in which I have developed a very research based questionnaire in which I have with parents. पहले वो मैं questionnaire देता हूँ बच्चों को और फिर वो मैं questionnaire देता हूँ उनके वालिदैन को कि आप किस तरीके से करियर प्लानिंग करते हैं और फिर पेरेंट्स किस तरीके से करते हैं. जब वो रिजल्ट्स आते हैं फिर हम वो डायलॉग करते हैं. एंड इट्स अ वंडरफुल डायलॉग. It's for 90 minutes. Oh, And parents feel so inspired that, we never thought of enlightening our student, our child in this manner. So the point is not to embarrass them. The point is to strengthen them. The point is to give them various fields that they are not aware of because of rapid change of education fields, and is to let them know कि ये यहाँ हो रहा है, यहाँ scholarship है, इतना खर्चा होगा, ये success story है, इसमें जो है आपका जो है ये career possibilities हैं, and then it will automatically you will earn their trust. और अगर खुदा ना sure. खास्ता बात नहीं बनी आपकी उस वक्त भी आपको you don't need to never lose your cool. You need to remain very very humble and very very polite with them. Beautifully put. How to pursue it with respect and to मुझे लगता है dialogue चलता रहना चाहिए parents के साथ. Dialogue is an ongoing process anyway, and we just leave it for those moments जब फैसला है बजाय इसके कि उस फैसले तक पहुंचने में जो आपका process था. I think that also includes ownership of the other party. Emphasize किया है respect को. यकीनन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आप जो कह रहे हैं उससे ज्यादा कैसे कह रहे हैं. Some great tips here. Raza Abbas is here with us. Craft your career. He's a career expert. Thank you, Imtiaz. Thank you. I'm glad. I agree. It's a wonderful session. Some great advice there. If you want to have a beautiful career plan, short-term smart goals rather than having long-term ones, enjoy different flavors of life. What do you say, Umair? Perfect. सुहेल ने बहुत अच्छी बात कही. Whatever you plan to do, take baby steps. Don't take leap bound steps, right? जितने छोटे कदम लेंगे लेकिन कंसिस्टेंट लेने. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, एक कदम लेते हैं फिर बेबस हो जाते हैं. तो इट इज मैंने उमेर के शुरू में बात करी कि ही इज बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 3 months, राइट? इट इज कंसिस्टेंटली ही इज लाइव एवरी सिंगल नाइट. So that is consistency. ठीक है. He took a small baby steps. So whatever you are planning to do, you need to take a short. आपका short term goals क्या हैं? आजकल तो COVID-19 में लोग प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं ना. But what they are doing on a lighter note, they take one day at a time. कि नहीं यार केसेस बढ़ जाएंगे, सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है. तो मैं ये कहता हूँ just make your life manageable, take one day at a time and live the best to it, and try to take a small baby steps and enjoy that step. Wonderful. फायजा ने बहुत बड़ा सवाल भेजा है तो हम दोनों गायब हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए. So with him, we have around 6 years of work experience, starting with business development, switching to finance, and spending 4 years there, and ending up realizing it's not meant for me. And later, also tried media planning, which didn't interest me either. So I just feel clueless now and directionless, as nothing truly inspires me. Currently, a stay-at-home mom since 2 years, but really want to pick my career again. How do you respond, Raza bhai? अच्छा, आपने माशाल्लाह काफी मेजर फील्ड्स जो है ना आपने पहले से ही उसको वो कर लिया. एट टाइम्स फाइनेंस भी कर लिया, बिजनेस डेवलपमेंट भी कर लिया, मीडिया भी कर लिया. एट टाइम्स वी आर अ बिट टू हार्ड ऑन आवरसेल्व्स. वी आर जस्ट वांटिंग समथिंग दैट इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना. ये भी इट इज इम्पोर्टेंट टू बी रियलिस्टिक. Especially the millennials. हाँ, ये मैं अभी आई वाज रिसेंटली डूइंग अ कोचिंग अ फ्यू डेज बैक. उसने कहा ही केम बैक फ्रॉम द यूएस. ही सेड मजा नहीं आ रहा. मैं कहा आपकी सैलरी कितनी है? 6 figure सैलरी, very good organization, very good job title. I think you have everything is given, right? So I think you need to be more calmer with your very high expectations. The expectation management before the important cheese. So if you have very highly ambitious targets,
you are just creating your life very very chaotic and very anxious, with all due respect. So going back to your question is, अगर आपको मीडिया में मजा नहीं आया, फाइनेंस में मजा नहीं आया, बिजनेस डेवलपमेंट मजा नहीं आया, तो आई थिंक एजुकेशन में हमें ट्राई नहीं किया. व्हाई नॉट एजुकेशन? ठीक है. एंड एजुकेशन इज अ वंडरफुल फील्ड. ए लॉट ऑफ पीपल से, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही इंडस्ट्री से हैं, तो वो कहते हैं इनको कुछ नहीं मिला, वो एजुकेशन में आ गए. एंड आई थिंक मैं कहता हूँ जिनको सब कुछ मिल गया वो एजुकेशन में आते हैं, क्योंकि एजुकेशन इज सच एन इंस्पायरिंग फील्ड. Wow. And I said that recently, you are basically igniting different minds. You have that creativity, कब कहाँ क्यों कैसे. तो अगर आप गलती से आगे, मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो अगर आप भी किसी True. गलती से किसी प्रोफेशन में आ गए, बिजनेस डेवलपमेंट में आ गए, या फाइनेंस में आ गए, या मीडिया में आ गए, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ, आपके ठीक है अभी तो मेरी जॉब नहीं मिली, कोविड है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब फ्रीज है. हाउ कैन आई मेक माय करंट जॉब इंस्पायरिंग? what how can I take additional tasks? How can I volunteer? How can I increase my visibility? Wow. How can I have robust teamwork? तो आप कहेंगे अरे वाओ, आई थिंक आई वाज बीइंग टू हार्ड. मैं इसी करियर, इसी जॉब में आई कैन डू अ वाओ फैक्टर. True, you can do things differently and also build skills during this time. So great advice there कि hard ना हो कि आप ही ने दुनिया बदलनी है और कल ही बदल देनी है. So beautifully said. I like that. Thank you for that. Thank you, Zunair. I love you too, darling. लड़की होता तो फिर ना बोलता. Zishan Aziz, great session today. Thank you, Raza bhai, for that. Lovely dialogue on career. आप अपने सवालात पूछते रहे comments में और live भी join कर सकते हैं इस link पे. This is also in the comments, so you can ask questions live. If you're interested, अपना LinkedIn या अपना resume दिखा के you could also have a live dialogue with Raza bhai. He can look at it and comment, give you feedback and answer your questions live. तो ज्वाइन करना है तो प्लीज बताएं ताकि हम आपको उसमें इंक्लूड कर सकें. Let's get to the next question. Usually there's a gap, mind the gap, mind the gap. London की ट्रेनें. There's a gap between industry and academia. How do we bridge it? A lot of corporate employers, जब वो आते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं, 3.9 GPA, 3.5 GPA, but how are they able to ensure that they are coachable? ठीक है. तो मैंने जो बात करी शुरू में वो है करियर रेडीनेस की लिए. आर वी डेवलपिंग करियर रेडीनेस सेंटर्स, करियर डेवलपमेंट सेंटर्स? जब स्टूडेंट्स आते हैं, जब यंग ग्रेजुएट्स आते हैं अपने जॉब पर, are they ready for the job? Are they coachable or not? ठीक है. Do they know how to work with different bosses? Do they know how to be a good follower? सबसे बड़ी एक चैलेंज ये होती है, जो यंग ग्रेजुएट्स आते हैं ना, they want to be, they 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 demonstrate leadership while the requirement is being a followership. Very interesting. लीडरशिप का जो prerequisite है, it's being a good follower. And I'll like Yeah. to give an example. When I went to Japan in Tokyo, वहाँ पर निप्पॉन में जाने का इंतफाक हुआ, which is a world's leading human development की जगह है. It's a dream for every human development person to visit. So I asked the Japanese counterpart कि यहाँ average age कितनी लोगों से, यहाँ कितने सालों से लोग यहाँ काम कर रहे हैं. Saying, Mr. Abbas, a very interesting question for the last 15 years. मैंने कहा really, that's very interesting. तो मैंने कहा why is that? मैंने कहा मैंने कहा I'm a very curious person, just out of curiosity. Why is that? What is the process of recruiting? And I'll link that with industry and academia. Saying, Mr. Abbas, when students graduate from our university in Japan, we ensure that they go through a 6-month followership course. Amazing. Wow. 6 महीने वो बताते हैं how to be a good follower. उसमें जो भी आपको एटीट्यूड्स के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो वैसे ही लोग फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं. अब जब वो 6 महीने जिसने वो क्वालिफाई कर लिया, 15 साल क्या 20 साल रहते हैं. So I think that is such a Wow. great insight कि it's all about behavior. How are you able to ensure कि जब आप लोगों से बात करें, आपके रगों में बर्फ होनी चाहिए, आपका temperament कैसा है? You could be the greatest Einstein in Pakistan in different universities, but how is your intellectual humility? How do you interact with different people? How are you able to initiate a dialogue? And industry academia का जो main चीज ये होती है, वो कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते हैं. वो लोग क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि करियर मैनेजमेंट के कोर्सेज नहीं होते हैं. जो सीवीज हैं वो अजीब और गरीब तरीके से आ रहे होते हैं. बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में जहाँ पर करियर डेवलपमेंट True. सेंटर्स हैं. तो गैप कैसे होगा? जब आप करियर डेवलपमेंट का ऐसे कोर्स इन्फोर्स करेंगे अपने करिकुलम में,
कॉर्पोरेट एडवाइजरी होगी हर यूनिवर्सिटी में, जहां पर इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप ब्रिज होगा। और तीसरी बात, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स आप स्टैब्लिश करेंगे मोर, अभी है लेकिन इसको मजीद करेंगे। Wonderful, wonderful. Great advice there to bridge the gap. Career development is a great bridge. Usually मिलाता भी है, लेकिन उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा स्ट्रेटेजिक होने की जरूरत है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मिस आउट करती हैं. Place called the Career Development Center. Such a big challenge for students, and it's a pity, it's a shame that there are no counselors on their PhDs, but why is AGC not putting a counseling and a career development center there as an essential for a university? Love it. Thank you for those insights. You've been around the world, mashallah. दोनों में काम किया है. I would say corporate development, public academia, चारों sectors, across sector भी किया है, and then around the world, mashallah. And you've quoted some great examples. Please, some more, what we can learn from the countries that you mentioned where career counseling is a civic right. As I mentioned कि Scandinavian countries, वहाँ पर career counseling civic right है, और South Korea. And what have they done? They have done legislative reforms in their assembly. ठीक है, तो currently अभी मैं एक policy document पर काम कर रहा हूँ. I know it's challenging in Pakistan, but it's worth trying. ठीक है, कि हर किस तरीके से पाकिस्तान में एक legislative bill पास हो कि career counseling हर शख्स को मिले. ठीक है, और दूसरी बात ये जो एक बहुत अहम चीज है, उस सिविक राइट में ऑनेस्ट स्कूल में इतना काम किया है. इट वाज ऑल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करियर एजुकेशन एक्टिविटीज. इट वाज नो लेक्चर बेस. इट वाज सिमुलेशन सिमुलेशन सिमुलेशन. अमेजिंग. तो जब आप सिमुलेशन देंगे तो दैट विल बी सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स टू एक्चुअली डेवलप देयर स्किल्स. इस पूरे कोविड-19 में अभी एक मैं एक इंटरनेशनल बॉडी के उस बोर्ड पर हूँ. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डेवलपिंग ए बिल ऑन रीस्किलिंग. कैन यू इमेजिन कि व्हाई कैन वी डू दिस ओवर हियर? कि दिस कोविड-19 हाउ कैन वी पास ए रीस्किलिंग बिल इन द असेंबली? तो इट इज इन ये चीजें हैं, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास जब हम इंटरनेशनल कंट्रीज में जाके देखते हैं. और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है. ये वो चीजें हैं कि वी नीड टू मेक दिस एज ए प्रायोरिटी स्टेटमेंट एंड वी नीड और टू हैव अब नेशनल प्रायोरिटी हो गई है. मतलब there's 50% expected unemployment right now if you include the people who are on uncertain leave, and in uncertain businesses. So it's going to be a massive number. वैसे ही पाकिस्तान में हर साल कोई 15 से 20 लाख ग्रेजुएट्स जॉब्स चाहिए होती हैं. उसके लिए जो ग्रोथ चाहिए होती है पाकिस्तान वो भी हिट नहीं करता. तो हर साल हम वैसी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं. इट हैज टू बी अ प्रायोरिटी, a national priority, to help people skilling up, to help people through these careers. अगर आप में से कोई लाइव ज्वाइन करना चाहता है, you can join us through the link now. We are in the 44th minute, 15 more minutes. Many questions to ask, और आपके सवाल comments के थ्रू भी आ सकते हैं. Let's sort of graduate. How can employees not only retain their jobs during this time, but it's become important कि आप जो कर रहे हैं वो इदारे में नजर भी आए, क्योंकि जब इदारे इस तरह के फैसले करते हैं तो visibility plays a crucial role. So what would you suggest? एक्सीलेंट क्वेश्चन उमैर. जब आप अभी खासतौर पर कोविड-19 में ना सिर्फ लोगों को इस वक्त जॉब अनसर्टेनिटी है, लेकिन इस वक्त जो करंट जॉब में काम कर रहे हैं वो भी काफ़ी एंग्शियस हैं. तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, हम्बल गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जॉब पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना हो. बी विलिंग टू ऑफर एडिशनल सपोर्ट, नंबर वन. ठीक है. नंबर टू, that's how you will gain responsibility. Be willing to volunteer. Be willing to be a robust team player. It's not about I did this and I did that and I did that. जितना ज्यादा आप हेल्पिंग हैंड्स करेंगे उतना ज्यादा आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी. ठीक है. और कोशिश करें कि अगर कोई आपका एम्प्लॉय या कोई आपका कोलीग स्ट्रगल कर रहा है, give him that ear to listen and give him that support that we can collectively do this. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एंड मेक श्योर कि हाउ आर पीपल एबल टू रिटेन देयर जॉब्स. बॉस मैनेजमेंट, I say this with a good sense of humor. I've seen a lot of talented people, Umair. When it comes to boss Yeah. management, oh my God, boss होता है. I mean, whether you are working internationally or nationally, give him that Yeah. respect. He's the boss. You are not the boss. That's why he's sitting over there, right?
It is that simple. So it is important to give him True. respect, and it's important there should be no surprises, and you should be friends with him or with her. ठीक है ना? All in a very professional sense, of course. So Hmm. और किस तरीके से promotion होता है? Promotion होगा the more and more responsibilities you take with ease, with a smile on your face, and with robust teamwork. ब्यूटीफुल। ये वक्त है थोड़ा अपने शेल से निकलने का और ज्यादा इदारे में हेल्प करने का, वॉलंटियर करने का, नई चीजों में साथ जुड़ने का। दैट्स हाउ यू विल गेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजिबिलिटी। Uzma is asking, she's literature and linguistic background, big experience as well, and now I want international relations or MBA. What do you suggest? What do you suggest, Okay. Raza? Literature and linguistics, that's a wonderful background. I think आप पढ़ने पढ़ाने के बहुत शौकीन हैं। दोनों चीजें, I think IR will be very, it depends. I have to look at your resume and your academic grades. It's not मैं एकदम से तो जब आप किसी को advice दे रहे होते हैं, तो I need to go into more in depth detail. So I will recommend कि what ignites you, जो मैंने पहले बात करी ना, international relations, which industry do you want to go? That will determine what I can recommend you. Number one. Number two is IR is very good if you want to go into media, or if you want to go in the education field. If you want to be क्या कहते हैं a university के professor बनना चाहती हैं, तो आपका career ambition क्या है? MBA is good. How good are you with numbers? If you are good with numbers, MBA is a very holistic degree. So it all depends what are your strengths, and if you are catering towards your strength, I think it should not be a problem. But I would like to know more about you in a one-to-one session to give you more justice to your answer. Wonderful. Thank you for taking that question. Um, Beautiful answer to how can employees gain visibility and attention. Before this, behavior we know is extremely important. Career planning, if it is, is it in one's career planning, job, and future business? बातें हमने बहुत अच्छी अच्छी करी हैं, मजाक भी किए हैं और नसीहतें भी करी हैं। तो आई जस्ट शेयर आई शेयर दैट कि जब लोगों से गुफ्तगू करो तो अपनी रगों में बर्फ रखो। टेम्परामेंट इज सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। हम लोग पूरे दुनिया में वी फोकस अ लॉट ऑन कॉम्पिटेंस, व्हिच इज गुड। मैं ये नहीं करूँगा आप बिल्कुल ही फारिग हो जाएं यूनिवर्सिटी से, बिल्कुल ही लाउजी Hmm. ग्रेड आए, बट योर बिहेवियर विल बी द द फाउंडेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर। And Wonderful. how will you do that? मैंने जापान की एग्जांपल दी। You need to show that you are a good follower and a good leader when required. सिर्फ फॉलोअरशिप ही नहीं करनी है आपको। जब आपने फॉलोअरशिप कर ली, फिर जब आपका बॉस का लीडर बन जाओ, आप ये नहीं कहते मैं तो फॉलोअर हूँ। So you need to have a very flexible mindset. Number one. Number two is you need to ensure कि आपकी जो पूरा आपका बिहेवियर है उसमें प्रोएक्टिवनेस कितनी है। जितनी ज्यादा आपकी प्रोएक्टिवनेस होगी उतने आगे बढ़ेंगे। As a society, we are very reactive. We need to be proactive. When we are proactive, we create opportunities. When we are reactive, we are Wow. waiting for opportunities. It's all about mindset conditioning. You need to have a very agile and a growth mindset. In a growth mindset, I can go True. on and on for this, because इस पर एक किताब है Yeah. mindset की, वो आप पढ़ें, Amazon पर available है। That will help you condition your mind to unlearn, relearn, and to think bigger. Wonderful. Anita had asked the same question. I hope you got the answer, Anita. Thank you. Some great insights there on career. Rizwan is asking, how do you measure the career counseling as a profession? I think it's a very meaningful career. You are impacting lives, you are impacting families, you are impacting communities, you are contributing to the economy by giving them very strategic advice. हमारे यहाँ जब मैंने start किया 15 साल पहले, पाकिस्तान में career counseling का क्या concept था? You call any expert of any field, he or she gives a lecture for about 30 minutes and career counseling is over. But this is a whole process. The process is when you learn it from countries where they have developed some very strong standards, and the best matrix is you are making someone's life better, bigger, and much more, and you are promoting livelihood. That is the biggest Ah, indicator that you are not just giving them he said, she said. You are giving them strategic advice कि आपकी जिंदगी अगर आप ये करेंगे तो आप ना सिर्फ बेरोजगार नहीं होंगे, बल्कि आपकी पूरी फैमिली में खुशहाली होगी। That is the biggest measurement tool that anyone can say about the profession. Alhamdulillah. wow.
Wonderful. And that leads to great health, great living, and अच्छे ख्यालात and mazid constructive contributions. And I is asking, how do you evaluate performance in a teaching career? What is the international standard for a good teacher? For a teaching career, I think it's important that they should know what are the different models of teaching, what are the different standards of teaching, what makes them a good teacher. इस वक्त पाकिस्तान में एक इदारा है क्या कहते हैं नेक्टे NACTE जो कि बाकायदा टीचर ट्रेनिंग के हवाले से उनके पूरे स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं. So I think for a teacher it is very important their performance should be evaluated. I mean, I'm not a person who likes to evaluate, but when you ask me, they should be in a constant growth mindset. They should ensure that their students are consistently learning, and they should ensure that their method of teaching is not just classroom but digital as well. आजकल जो है ना it's all about digital. How are they using Microsoft Teams? How are they using Zoom? How are they using digital education in their training? तो कितना ज़्यादा टीचर जो है willing to learn new methods of teaching है, and it should be student centered teaching. The student is very important. I mean, a lot is doable, जो कि तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था physical classroom में. कुछ लोग upset भी हैं missing the physical, but the digital allows for a whole different library of tools और transform होना चाहिए technology के साथ. तो बहुत अच्छा opportunity भी है actually, especially young teachers, they can learn these tools fast. Farah is asking, she's into writing and she focuses on positivity, motivation, learning, and growth. People are low on reading such things. How can she utilize her energy in a better way, being housewife and mother of two? What direction should she take? Okay, first of all, आप low now. I think you are already high by writing this wonderful text. So we need to have a very strong self-belief, number one. Number two is at times, when you're reading a book, it makes you, अब lazy हो जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं. आजकल Amazon पर या दुनिया जगह पर YouTube पर इतने videos available हैं, short videos. Just take everything is short, right? 5 मिनट के 10 मिनट के videos हैं, that will just ignite your energy. ठीक है ना. Amazon पर बेशुमार ऑडियो टेप्स मौजूद हैं मुख्तलिफ बुक्स के. हर इस वक्त जितने भी ग्लोबल बेस्ट सेलर्स हैं वो सारी बुक्स जो है ना अवेलेबल हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि जो लीडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं आपकी फील्ड में उसमें जो है वो आप चेक करें कि आपकी फील्ड के इन्फ्लुएंसर्स कौन है. आप में से जो लोग लिंक्डइन पर हैं आप देखें कि आपकी फील्ड के इन्फ्लुएंसर्स कौन है, उनको सिंपल फॉलो करें. यू विल ऑटोमेटिकली go into a different stream. You can join various groups of your field that will give you some more intellectual humility, more creativity, more ideas. So be easy on yourself. I think अगर reading से मसला हो रहा है तो आप audio कर सकते हैं. Audio से मसला हो रहा है, you can meet people live. I think there's so much of energy when you meet people live. Yeah, That's just a lot of positivity. true, true. Huzefa is asking, good behavior can also bring investment, which lacks in Pakistan. Is that right? I believe so. What do you think, otherwise? Well, I will not make a studio typical statement. I think we have some wonderful behaviors as well. So we should not be so judgmental in that. इस मुल्क में बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो ठीक है, और वो गुड अच्छी बिहेवियर. इन्वेस्टमेंट ले भी आते हैं सरप्राइजिंगली. हाँ आप देखेंगे जिन चीजों पे लोग कहते हैं इसमें तो कभी, एंड दे गेट दैट इन्वेस्टमेंट. सो हाँ. तो अगर पाकिस्तान में एज पर योर पर्सपेक्टिव अगर लैग करती है, why are you not demonstrating that? Why are you not demonstrating that behavior yourself? Don't wait for others. You should be the change, right? Bingo. या और ये पाकिस्तान में ब्रांड यूनिक बनना है ना आपको, तो सच्चे बन जाए. Okay, career counseling. We're in the 55th minute. Thank you, Raza. It's been a great session. कोई अगर live join करने में interested है, पूछना चाहते हैं, here is the link. One last opportunity, and I'd like to know workplace coaching के हवाले से, because आपने कहा कि career is ongoing and workplace में ये coaching के through ही होता है. How does it work out? अच्छा, वर्कप्लेस कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी टॉक ऑल अबाउट फील्ड्स. फील्ड आ गई, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, जॉब में मिल गई. अब बहुत से लोग, खासतौर पर नौजवान लोग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव यंगस्टर्स, तो प्लीज डोंट टेक मी इन रॉन्ग डायरेक्शन, कि जॉब्स कर रहे हैं, जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं. 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, एक साल, मजा नहीं आ रहा. आई वाज थिंकिंग समथिंग रियली बिग. तो वी नीड टू टेक इट इजी, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू वी इंश्योर कि जब वो जॉब पर आ गए हैं ना, उन्हें तो किस तरीके से जब आप रहेंगे जॉब पर, जब भी तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी. जब आप चले ही जाएंगे, व्हेन यू विल लीव द पिच,
you will not score in a cricket sense. So you try to be on the pitch. Sure. जब आप पिच पर खेलेंगे बॉल खुद ब खुद आएगी. They are so quick in leaving. So I would recommend, please do not leave before 1 year passes by. ठीक है. तो हम वर्क प्लेस कोचिंग में क्या बात करते हैं, we work specifically on behaviors, we work on areas that will get you visibility, we work on a lot on relationships, and we work a lot on how do you make sure that your true potential is reflected in your organization. And we work on the most important thing is boss management. How do you manage the boss? Yes. How do you manage the boss is a lot of people's worry. बहुत सारे लोगों की जिंदगी, आपको पता है रज़ा भाई, बहुत सारे लोगों की शादियां बहुत अच्छी हो जाएं, बच्चे बहुत खुश हो जाएं, अगर वो बॉस मैनेजमेंट सीख जाए, तो बॉस मैनेजमेंट के बहुत बल्कि इस दुनिया और इस दुनिया के बाद भी बहुत सारे फवायद हैं. अपने बॉस को Inshallah, तरक्की inshallah. दिलाना भी, इनेबल करना भी बहुत बड़ा रोल है. वंडरफुल. थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू, फॉर some brilliant dialogue. बहुत अच्छे सवालात आपने पूछे. कुछ सवालात जो ऊपर मुझसे मिस हो गए, I'm trying to sort of bring them in, but if you are still here and you ask something that I've missed out, so you can ask in the comments, and you can also join us live if you feel like. Um, okay, there was a question around. Okay, this is a long one. Would you like to read it? Meanwhile, I'll hunt for another question. The corporate sector must keep into high consideration that training and development of employees must aim at feeding their thoughts with some healthy food. I like that. Okay. Their performance may never reach to an optimal level unless they are shown the ways to perform according to a thought process. Higher the confidence level, higher will be the outcome. Excellent question, Amir. I will recommend कुछ programs होते हैं US में तो बहुत common है, and that is called employee assistance program. What is the employee assistance program? It's basically corporate mentoring, coaching, making sure that whatever you are talking is to give them that level of motivation. MNCs में तो ये बहुत ज़्यादा होता है, multinational organizations में. Unfortunately, with all due respect, state culture में ये नहीं होगा. वो कहेंगे you figure that out on your own cost, on your own expense, on your own time. ठीक है. लेकिन MNCs में है तो unfortunately आप आजकल के तो जो पूरा कोविड का जो सूरत हाल है, आप एक्सपेक्ट ना करें कि एम्प्लॉयर करेगा. इस वक्त बेशुमार अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. यू कैन ऑलवेज टेक एक्सपर्ट wisdom from a career practitioner. He or she will able to guide you, coach you, provide you that mentoring. We have corporate mentoring programs with individuals and with groups as well, to give you that structure of your career कि आप current जगह पर अगर आप stuck हैं अपने career में, how to transform your given career and your future career as well. So I'll be happy to have a conversation on that as well. Sure, wonderful, and we'll find out your contact sooner भाई. But एक ही मिनट है, इरफान का सवाल ले लेते हैं. His wife is a pharmacist, but right now she's a homemaker, and even if she wants to pursue a career, she cannot do it because laws here require her to pass another exam, but she's unable to pull it off. What is your suggestion for people like her? Okay, अगर अब वो एग्जाम पास नहीं कर पा रही हैं, तो I think this is more of related to time management. You see, passing an exam, you have to pass an exam, right? It's when there are no, from what I understand from the question is that she wants to pass an exam, right? So at times you just have to manage your time. I know I have a lot of respect for housewives that are managing dual careers. Because being a housewife is also a very important career that everyone is pursuing, right? So just manage your mornings well. Wake up a bit early. Like the best time for a housewife is if you can master the mornings, like wake up at 4 or 5 in the morning. That is a very good power time, 5 to 8 o'clock. That will be a good time जब आप time management कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको exam pass करना है तो unfortunately there are no shortcuts. You have to pass the exam. Wow, straight as it is, has to be done, and it seems like a time management challenge. Get going already. Oops. Abhijan, razaabbas.hr@gmail.com is Razabai's email. This is for all of you जो कि अपनी conversation continue करना चाहेंगे, जो This आपने was the बात correct email. छेड़ी है. It's not the. I'm sorry. ये one. I'm Sorry. sorry. Okay, I'm gonna get the correct one. Uh, please see if this one is right. Yes, bingo. Okay, razaabbas.hr@gmail.com. आप conversation carry on कर सकते हैं.
one-on-one Raza bhai ke saath. So please do that, razabaz.hr@gmail.com. Wonderful dialogue, Raza bhai. Thank you very much. Solid advice. And very very crystallized, बहुत specific. I wish, I pray कि मैं आपकी तरह specific बात कर पाता स्ट्रक्चर में रहते हुए कर पाता और उमर, अपने जिस्म अब के अंदर, अब अपनी रगों अब के अंदर बर्फ रख पाता और टेम्परेमेंट से सब सह पाता अब you are very humble, mashallah. Thank you. You're very kind to craft your career. This was Raza Abbas joined us. Thank you very much, Raza bhai. Any last word? Anything you'd like to close with? First of all, thank you. It was a fantastic dialogue. I think we need to have more dialogues in this country. Um, kabhi na umeed na ho. The best is yet to come, and always believe in yourself. You are a wonderful human being. You deserve the best for yourself, for your family, for your community, for your country, and for the world. God bless. God bless. Wonderful. What a powerful close. Thank you very much, Raza bhai. Take care. Stay safe. And may you bloom, prosper, and help many, many others discover themselves and make better choices. So, Raza Abbas, we had a dialogue on crafting your career. I love the advice. There was just so much to take on from this. And some paradigm shifters as well. आप में से जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, आपकी कुछ सवालात जो कि बड़े अहम है, मैं कैसे फैसला करूँ, किस एज पे, कैसे मुख्तलिफ जिंदगी के लेवल्स में करियर काउंसलिंग कैसे यूजफुल है, जरूरी है. डू लिसन टू इट, टैग योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद दोज हु कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, स्पेशली वो जो कि जॉब लूज कर रहे हैं या ज्यादा टेंशन में है. एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी डोज भी है और बहुत प्रेगमेटिक पॉजिटिविटी है. थैंक यू वेरी मच रजा भाई फॉर दैट. Gulshan, thank you. Zimil, Fariha, Bashir, Tahir, Zishan Aziz, Anita, Rizwan Ashraf, Amar, Rizwan again. Some great conversations there. Lovely questions. अपना ख्याल रखें और ज़रूर 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 एहतियात करें. स्मार्ट लॉकडाउन ऑन है और दुनिया भर में जहाँ जहाँ एक्टिविटीज रिज्यूम कर रही हैं वहाँ पे दोबारा शट डाउन भी हो रही हैं, रिकंसिडर भी हो रही हैं. एंड इट ऑल डिपेंड्स कि वहाँ के लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. डिनाइल से बाहर आ जाएं. कोरोना इज फॉर रियल. And you can catch it, I can catch it. We may never know it, but we can end up killing our own family and our friends around. So take care, एहतियात करें, ख्याल रखें. और करियर के हवाले से जादुई गोलियां ना पिए. मैं आपको ये बात एज ए मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा हूँ, एज एन इंस्पिरेशनल स्पीकर कह रहा हूँ. प्रेगमेटिक गोलियां जरूरी हैं करियर के लिए. करियर इज pretty much going to determine the life you're going to live, the lifestyle you're going to have, what you're going to keep thinking, working all your life. Very crucial. Your family is going to be impacted by it. So do pay special attention to it. जहाँ बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं वहाँ अपनी जिंदगी प्लान ना की, अपना काम प्लान ना किया और जो करना है इस दुनिया में, जो छोड़ना है वो प्लान ना किया तो क्या किया. ख्याल रखें. कल दोबारा मिलेंगे बहुत अहम डायलॉग के साथ द क्वारंटीन सीरीज का.